আয়োজন কৰা বিশেষ কৰ্মশালাৰ স্বাগতম আৰু আজি আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ লগত অতিথি হিচাপে আৰু উপস্থিত আছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ আছে আমাৰ লগত। ছাৰ সেই সুযোগ পাইছে আৰু ছাৰৰ পৰা আজি আমি বহুতখিনি কথা গম পাওঁ। লগতে আমাৰ ডিৰেক্টৰ ছাৰ ছাৰৰ পৰা আমি প্ৰথম আমি ছাৰক সম্বৰ্ধনা দিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি আমি অতিকৈ আচলতে গৌৰৱান্বিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ ছাৰৰ আমাৰ মাজত ছাৰৰ সুনাম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পায়ে থাকোঁ। ছাৰে অসম পুলিচৰ যি অৱদান ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে এয়া অতুলনীয় আৰু তাৰ বাবে ছাৰক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাৰে এনেকৈ কাম কৰি যাওক আৰু ছাৰে 2020 চনত CM ছাৰৰ এটা বিশেষ মেডেল পাইছিল, তাৰ বাবেও আমি ছাৰক পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে ছাৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰি থাকে, ইউথৰ লগত কামি থাকে। চ' ছাৰক আমি তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি ডিৰেক্টৰ ছাৰ প্ৰথমতে ছাৰক আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। Good afternoon to everyone. To have gathered here and special welcome to our very dear Anand Mishra sir. I am really very thankful to him for in spite of a very hectic schedule, today he is going for a very tight schedule, but still he is here amongst us for at least we'll be here for 1 hour. So we'll try to gain maximum as much as it is possible in terms of knowledge, and that can help us to face the upcoming interviews, which will be happening in the next month, that is the month of May. So I welcome Anand Mishra sir amongst us, and I'll request you to whatever doubts if you have regarding how to face an interview, and I'm very sure sir will be discussing all his experiences regarding facing an interview, how to mainly pull an interview towards your side. Okay, that also can be done during an interview because in a time duration of almost 25 minutes to 30 minutes, any random questions when it can be asked in front of you, there is also a chance that you can also attract or pull some of the questions towards your side or towards your field. Okay, so basically there are 8 to 10 fields, like from your personality background, from your graduation background, from whatever currently you are doing, if you are working somewhere, or your optional subjects, or any random current affairs topics, or any random situation-based topics, how to deal or how to pull towards this particular field, towards in a certain field where you have the confidence. Definitely sir will be sharing all the experiences and he will be guiding us throughout the time period of 1 hour. So I request Anand Mishra sir to start with this session. But this we got, isn't this a small group, so don't need to do lecturing, isn't it? So we will take up questions. Okay. Before I start speaking out, which becomes irrelevant, let us start with the question paper. In the sense, I keep on telling, when you actually want to do preparation, study, baad bhi kitab padho, pehle question paper. You know why? Because that makes you focused. So once I start getting questions from you, my deliberations will be more focused. So I know where to and what to speak. Otherwise, I'll speak what I want. I won't speak what you want, isn't it? So I need to speak what you want. So I would like to have questions from you. I'll not answer it immediately. I just keep listening all the questions. Okay? And at the end, we will try to answer all the questions. If at the end, कुछ question बच जाता है, जल्दी कोई question बाची जाए, अपने आप को कोई देखो कि इशू हुआ नहीं, आपको एक बार कोई दो, हाँ? ठीक है? So let us start taking questions, right? Anything, any wild thing comes to your mind, any wild thing, because you see this is an setup, just छोटा setup is I'm happy. It's a small classroom setup. So I'm happy for this, and I would request questions. Okay? Look, all of you, most probably all of you will be going for APSC interview, right? APSC interview. Who knows next year UPSC interview will be there. Okay, so let's get the questions first. Anything which comes to your mind. Don't think my question is a bad question. Don't think it bacha nahi se na hoga ki question to hoga. You just ask anything. Okay? Pushing.
Good afternoon, sir. Hello. My name is Saurabh. नहीं, पहली बार जोर से बात करना। Okay. Good ये आपका afternoon, sir. इंटरव्यू का पहला आपका नियम है, you have to be audible to your interviewer, है ना? नहीं तो अगर आपकी बात सुन नहीं पाएगा तो फिर पॉइंट है। इसीलिए you see I am also speaking without a mic. Good afternoon, sir. My name is Saurabh. I have a question. That is, if I go for an interview and if the interview panel asks me a question and I reply to that question and they say that I know that the answer is right, but they used to counter that this is not the right answer and give another explanation. Then how to tackle this situation? How to reply to that? Perfect. Next question. Thank you, I'll take sir. questions first. Huh? Next question. Ucho. Good afternoon, sir. Thank you for joining us. My question is, before the start of the interview, we are asked to tell me about yourself. This question is very frequent. Do we need to tell our educational background, our address, or do we need to tell something extra? And the second question is, during interview, if the interviewer suddenly asks me Assamese language, do I continue in English language or start answering in Assamese? और questions? अच्छा मैडम को बोला देते हैं। So, suppose a candidate, he or she is from, suppose science background, and she doesn't choose the subject, and for optional she chooses another subject. So, and if the panel asks her, like, why have you chosen this subject and not your graduation subject? So, how do you tackle such situations? Sir. Good afternoon, sir. So my question is not related to interview actually. So my question is like, how is the life of an IPS officer? And sir, what is like the political pressure to work on? Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, I would like to ask, sir, if there is a question I don't know the answer properly, how can I politely say that I don't know, or if I have to say it in different way? Good afternoon, sir. Sir, what can be the best answer if a panel member asked, why do you want to be a civil servant? Anything more? Good afternoon, sir. Hi. Sir, my name is Sandeepan Goswami. Sir, I have a little bit of a stammering problem. Sir, do you have any tips on how to overcome? Sure. ठीक है, so fair enough to start with, like first of all I'll speak something, then I'll keep on getting your questions जो आप उसके बारे में बोलेंगे। Number one, कि whenever you face your interview, first of all I believe this is not an interview, this is a test of personality. So English is okay, मिला जुला के बोलेंगे ना। So the thing is कि it is a test of personality in the sense they try to understand you as a person. Remember, they are not there to choose professors. आपका ज्ञान does not matter much. ये कितना ज्ञानी है आप, ठीक है? What they want to understand, whom they want to choose is a bureaucrat. They want to choose a person who can deliver in public life, a person who can face things, who can handle situations. They try to get a personality who comes across in a pleasant way. Even in a difficult situation, the person is able to maintain his or her balance. At the same time, the person keeps himself or herself in control of the situation. So, ये सारे कुछ basic personalities हैं, plus definitely your communication skills. How you communicate, how you speak, whether you are able to keep hold of the interview or not. आप बात कर रहे हो, कोई interviewer अपना मोबाइल चेक करना शुरू कर देगा, lot of things. अरे ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है, क्या टाइम पास कर रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, whether everybody is interested, यार ये क्या बोलेगा, अच्छा ऐसा है, whether you are making them inquisitive about yourself, whether एक क्वेश्चन पूछा तब तक दूसरा इंटरव्यू करना शुरू कर दे, अरे ये बात, you make them into a contest to talk to you, okay, 5 members अगर होंगे, ये सारे situations they want from you. First of all, when you approach, remember always they are there to select you. They are actually positive people, they are not negative, they are not there to reject you. You understand? So don't go by the impression that यार मैं reject हो जाऊंगा. वो खोज रहा है, वो खुद के आपसे पूछेगा, यार तुम टाइम कुछ तो बता भाई, तेरे को लेना मुझे, अपने बहन कुछ तो बताओ तुम्हें लेना मुझे. So they are there to select you. So that should be a basic confidence. Once you enter, मैं जब पहली बार UPSC इंटरव्यू में गया, तो 2 बार गया इंटरव्यू. पहली बार गया तो पूछा हमसे कैसे आए आप, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाने लगा, कैसे आया यार, बड़ा डीप क्वेश्चन है ये, तो फिलोसफिकल क्वेश्चन है, कैसे आया.
बहुत पढ़ के आया, बहुत मेहनत करके आया, है ना? You know, I started thinking more than required because I lost my natural self. You know, I lost my natural self. I was not me because उसके पहले मैं कुछ कोचिंग में गया था. Don't mind sir, कोचिंग का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कोचिंग में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है. हाँ, I went for a mock interview. Okay, अब वो mock interview में बताया ऐसे बैठना है, ऐसे कपड़ा पहन के जाना है, इधर देखना है, ऐसे नहीं करना है, हंसना कम है, बोलना ज़्यादा है, ये नहीं बोलना. वो मैं I was like confused जब मैंने ये asked, this whole question started running in my mind. ऐसा बोला था, कैसा बोला था, क्या बोला था? And when the lady asked, Parveen Tala madam का board था, she asked, how did you reach here? I was thinking it's a philosophical question. How did you reach? गरीब घर का लड़का हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है. हाँ, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत मेहनत काम करते हैं, कैसे पहुँचा? ये सब सोच रहे हो कि अच्छा लीव इट. दूसरा क्वेश्चन ले, मेरा क्वेश्चन ही चला गया. सिंपल यार, ऑटो से आया मैडम, और कैसे आया? I would have told ना सिंपल क्वेश्चन मैम ऑटो से आया, है ना? Then she could have asked more अगर जानना है तो. We should not try to read more in between the lines. ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो आप confused हो जाएंगे. You look like a confused person in the interview. You look like you are a very tactical. They don't want tactful person. मुझे देखो ना मेरी personality तो जग जाहिर है सब दे दे, जो मर्जी बोलता हूँ, जहाँ मर्जी बोलता हूँ, है ना? तो actually bureaucrats को ऐसे ही होना चाहिए. Politics करना आपका दिमाग में नहीं आना चाहिए. आप सोच समझ के बात करो, बैलेंस करके बात करो, इतना बताना है, उतना नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए. आप में सच्चाई होना चाहिए. You should be truthful. That is what the interview, I believe. मैं अगर interview में दूँगा, you may be a person of a less merit, doesn't matter. But if you are a person of truthfulness, sincerity, training करके आपको सिखा देंगे, efficient बना लेंगे training करा के. लेकिन truthfulness कहाँ से लाएंगे? Character कैसे change करेंगे आपका? So that character which is original, again that you cannot वो practice करके नहीं जा सकते truthfulness का. अगर आप है तो है, नहीं है तो नहीं है. Okay, that will be reflected, and the interviewer will know. So my point, the first point is be truthful. ओके, हम जो है भाई हम हैं, ऐसे ही पैदा हुए तो भगवान ने ऐसे चेहरा दिया है, जैसा बोलने का ऐसे तरीका दिया है, इतना ही लैंग्वेज कमांड है. दैट इज व्हाट आई एम. सर लेना तो ले लो, ना तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई ले लेगा. ये अप्रोच होना चाहिए आपका. आप भगवान के सामने नहीं बैठे, नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड. यू आर नॉट, डोंट थिंक दैट यू आर बीइंग जज. यू नो देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एलिवेटर स्पीच. यू नो अबाउट एलिवेटर स्पीच, मेनी ऑफ यू माइट नो दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, सपोज ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ सम मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग. So, if you are going on a multi-story building to meet your interviewer, you enter an elevator, you enter a lift, और साथ में आपका वो भी बंदा घुसता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है. इंटरव्यूअर भी साथ में घुसता है. Both of you are in the elevator for 20 seconds. By the time you reach 20th floor, and those 20 seconds is your elevator speech. Whether you open a communication, whether you hit a contact with him, आप उससे बात करते हैं या नहीं करते, वो 20 सेकंड में आपकी जो हरकतें होंगी और जो उसने देखा है, आपका इंटरव्यू का रिजल्ट वही होगा. आप वहाँ चाहे 20 मिनट बैठ के कितना ज्ञान दे दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता. वो 20 सेकंड में आपको जो उसने देखा है कि नेचुरल सेटअप में, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नेवर नो हाउ लॉन्ग योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी. इट मे एंड एट 5 मिनट्स. सर ने बोला 25-30 मिनट, 5 मिनट में खत्म हो जाए. बोले यार बकवास लड़का है, कोई काम करे, इसको भगाओ. यू नो, ये सब चीजें यूट्यूबर से सीखो. शुरू के देखते हो 30 सेकंड को ऐसा पैप अप कर देगा ना कि यू हैव इंटरेस्ट टू वॉच द होल वीडियो. Isn't it? They'll keep it at high pitch. अभी मैं अगर शुरू करता अभी आपसे प्यार से अच्छा ऐसा, तो थोड़ी देर में इंटरेस्ट चला जाता. I started at a high pitch, isn't it? You got involved by asking questions, isn't it? So this is not a style which I am trying to copy or do anything, but this is how I believe that I don't know यार. अभी फटाक से फोन आया डीजी सर का, क्या जा जाओ मीटिंग में, मैं भाग जाऊंगा. खत्म इंटरव्यू का आपका क्लास यहीं पे. तो I have that limited time, so you also will have limited time when you go for your interview. Always think this is the last question. Each question is your last question. Always have it in mind. The person might select or not select. I will not say reject. The person you might get selected in first 5 minutes. People with 5 minutes interview have got 80% marks. People with 45 minutes of interview have got 30% marks. You know, so don't go by the idea कि interview कितना लंबा. 5 मिनट में बंदा समझ में आ गया, यार ये लड़का ठीक है, क्वालिटी है. क्यों टाइम वेस्ट करना आपके साथ? ठीक है यार, इसको तो सेलेक्ट करना है. पहली बार में होता है ना यार. नो कि फर्स्ट टाइम में पहली नजर में प्यार जिसको कहते हैं, वैसा चीज. देखा यार ये तो चाहिए लड़का, सेलेक्टेड, थैंक्स, यू गो. अब आप बाहर निकल के सोच रहे हो यार 5 मिनट में भगा दिया, क्या हो गया, व्हाट इज दिस, एम आई नॉट गुड, विल आई बी रिजेक्टेड, है ना? दे डिडंट लाइक मी. मेबी यू लाइक, दे डिडंट लाइक यू, दे लव्ड यू यार. They loved you so much that they have selected you in 5 minutes. It is possible. The more they talk to you many a times, because the interview board is confused about it. If they are confused, they are not understanding कि लड़का अच्छा है बुरा है, तो और ज़्यादा बात करें.
अच्छा मे भी थोड़ा और बात करने से मे बी आई अंडरस्टैंड यू बेटर, दैट्स व्हाई द इंटरव्यू गोज लॉन्ग। सो जिसका लॉन्ग होता सोचता है अरे हमको तो बहुत पसंद किया, उनको पसंद नहीं किया, यू हैव कंफ्यूज द बोर्ड। ओके, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू वाज फॉर 50 मिनट्स, आई गॉट 132 मार्क्स आउट ऑफ 300। दूसरा वाला आई गॉट 80% मार्क्स विद द इंटरव्यू ऑफ 12 मिनट्स। और दूसरी बार मैं बोला यार ये तो पूछा ही नहीं कुछ यार, बोलने ही नहीं दिया, कुछ मौका ही नहीं दिया। When I entered, you know, it was like a long room, maybe itna long raha hoga. You know, walked in, I went there. They said, "So, Mr. Anand, you want to join IAS?" I said, "I want to crack this exam, but actually my first preference is IPS." But you are already in IPS. I said, "No, sir, not yet. But hopefully, if things go well, maybe yes." You know, I said like this only, smiling. So they said, "Okay, we thought you were already." Why? Because of my demeanor, the way I wore my uniform clothes, the way I walked in, you know, the way I approached them. You know, it was confident. It was like कि मुझे क्या कर लोगे मेरा यार, नहीं सेलेक्ट होगा और इससे बड़ा क्या कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो आई वेंट विद दैट एंड दैट, सो यू नो यू कीप योर माइंड बिजी। लाइक सिंस क्लास 8 आई हैव बीन बिहेविंग लाइक एन आईपीएस ऑफिसर। ओके, क्लास 8 से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, ये गॉट इनटू माय डीएनए नाउ। तो जब इंटरव्यू में बोर्ड में गया तो बंदे को लगा कि यार इसकी जो पर्सनैलिटी चाहिए आईपीएस की, इसकी तो है, इज ऑलरेडी हैविंग द एप्टीट्यूड, सुपर गुड विद द एप्टीट्यूड एंड ही इज क्लियर इन हिज हेड, चाहे मेरा फर्स्ट रैंक भी हो, मुझे आईपीएस ही बनना है। उसके दिमाग में कोई डाउट से नहीं है। वो क्वेश्चन जो पूछा सिविल सर्विस करके क्या करोगे, मुझसे भी पूछा गया था, है ना, बताता हूँ मैं। तो यू नो व्हेन दे आस्क्ड मी 2-3 क्वेश्चंस एंड दे न्यू कि बंदे को पता है। एक क्वेश्चन पूछा मुझसे ये इसके बारे में, ये क्या बोलते हैं इसको, हॉटस्पॉट्स मालूम है? मैं कहा हाँ सर सुना तो है हॉटस्पॉट्स, आई नो ब्रीफली। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन द प्लेस? आई सेड सर आई सॉरी आई डोंट नो। You don't know, there are very few, you know. I said yes sir. You know what are they called? Ramsar site, have you heard? I said yes, I've heard. Can you recall what it is? I said not really. I may be babbling. If I say something, it will be all guesswork. So I think better it's not to speak about this. Okay. You know that was. I faced a question which I did not know, and I smile करके बोल दिया. You know कि नहीं आता था. But smiling should not be laughing as if I am laughing on the board members. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. It should be a pleasant, natural smile which comes to you when you speak. The way I am. You see, I'm not feigning my smile. देखना मैं बोलूँ. अभी रिकॉर्ड करूँ तो बताता मैं कुछ। तो anyways, तो this smile is natural. It comes naturally to me. I'm not, nobody can train me to go and be, you know, smiling. Smile makes you more confident. It makes you look more confident, you know. Because if I'm in control of the situation, I'll not appear tense. I'm smiling. Smiling means the person is in control. Okay. So these are certain things when you approach the board, you have to be a natural demeanor. आपका जो कपड़े पहनने का जैसा मर्जी कपड़े पहने हो, कोई प्रॉब्लम बस फॉर्मल पहनना, वहाँ पे यार वैसे डिस्को टाइप कुछ पहन के चले गए तो थोड़ा लगेगा आउट ऑफ प्लेस। ये इसका बेसिक ड्रेसिंग सेंस ही गड़बड़ है बंदे का, है ना। तो वो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा। आप टी शर्ट पहन के चले क्लब हाउस तो जा नहीं रहे, तो when you go in formals, normal black shirt, white shirt, black pant is a normal thing. तो कुछ भी पहनो, whatever you want to wear, just wear it properly, साफ सुथरा कपड़ा रहे, थोड़ा आयरन वायरन किया रहे, और टाई है तो टाई पहन लो। if you are comfortable, wear a tie. I did not wear a tie. सब मेरे बोर्ड में बैठे सब टाई पहने होता है, तुमने टाई नहीं पहना, मैं यार वो मेरे फांसी जैसा लगता है। हाँ, मैं स्कूल जैसा पहनूंगा ऐसा खोल के आधा में तो फिर खराब लगेगा, इससे अच्छा पहना ही नहीं। So I was not wearing a tie. So it is how you are comfortable. Nobody asks you to come in a particular dress code. कोई ऐसा है नहीं। If they give कि come in a proper formal suit or a long suit, then it's a different thing. But उसको बोला नहीं कि क्या dress पहन के आना है, so you go however you want. Okay. When you approach the board, as I said, always remember they are there to select you. They are not there to reject. About like you know the questions, the language वाली बात है कि if they are asking in suddenly they switch over to Assamese, you reply in Assamese. The good part is you should always communicate to a person in a language the person understands, right? It is not that you have written it that your preference is English. Your preference is English, but the person asks you in Assamese. You should and you must reply in Assamese. It looks odd कि आपसे कोई Assamese बोल रहा है, आपसे अंग्रेजी बोल रहा है. It looks odd, right? It's not natural, right? So that has to be taken. The moment the person switches over to English, you go back to English. He speaks Hindi, you can also give him 2-3 Hindi words. Okay, so the communication should be 1-to-1. कहते हैं ना child to child, child to adult वाला communication. वो आपसे बच्चा बन के बात करे, आप भी बच्चे बन के बात करें. Then only you can communicate. बच्चे के साथ आप adult बन के बात करोगे तो the kid will not be with you. भाग जाएगा छोड़ के. अंकल गंदे अंकल है ना. बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ, उसके साथ मिट्टी में खेल जाओ, उनको जो कर रहा है उसके साथ करो. Then only he likes. So if the board is behaving with you like this, you should respond it like that. You should not try to become like dress up so tight करके. आइए ना please.
So I believe that you should not try to pass off an image which is not natural, है ना? अगर मैं इतना हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, बाइक चलाता हूँ, मुस्कुरा रहता हूँ, गोली मारने में भी 2 बार नहीं सोचता हूँ, because your thing, your USP, your point has to be very clear. You know, आपका personality has to be clear. You should not be confused that if I am smiling, I am a serious person. It's not like that. Okay, but it has to come out in your speech. Because तब तो आपको ड्यूटी तो देगा नहीं, काम तो देगा नहीं बोर्ड कि काम करके दिखाओ, तुम तो स्माइल कर रहे हो, oh no you are good in work. But your personality, it should not appear very shy. Okay, you should be serious about the purpose. Yes, you are there for a serious work, but it should not be unpleasant. It should not be so serious कि उसको टेंशन हो जाए कि यार क्या हो गया इसको, क्यों इतना serious है भाई? You know, you enjoy your interview. If you don't enjoy your interview, then your interview will enjoy you. है ना? The way it is. So you enjoy interview. There will be people who will say, you will tell something and just say, no, ये तो गलत है, ये तो पक्का गलत है. तो मेरे से भी ऐसा क्वेश्चन आया था, you know, कि they were countering me कि no, ये गलत है यार, ऐसा नहीं होता है. तो मैंने कहा सर अभी तक के ज्ञान में तो मुझे इतना ही पता है. बोला sorry sir, but whatever I know, as per my understanding, this is what I knew, but now you are saying this, I'll go back and check sir. I'll update myself regarding this. You know, I love this. I'll not counter लड़ाई करूँगा, मैं नहीं ऐसा ही है, दो हाथ करके देख लेते हैं. ऐसा नहीं है, मैं जो बोला वही ठीक. लड़ाई नहीं करना बोर्ड के साथ. Because once you go in public service, you know, if you join as a magistrate or join as a police, there will be public standing in front of you, and they'll say, "Na, you do hoise." It hoise, I'm hoise, hoise. आपने पढ़ा नहीं, मैं जानो basically. आपने की जाने. इटू कोइले आरु खम हो बोता. आरु दूटा पाथर मारी. है ना? जतिया होise मानो कि ना इटू ही होise. आपने जी ना जाने आपने की होise. इटू ही होise. आपने बहुत ठीक ही होise. है तो मैं जीवन जानो इटू होise. आपने जिटू होise. হয়তো বেলেগ আছে তো মোক আৰু সুধিব লাগে জানিব লাগে কথাটো আমি আৰু ইনকোয়ারি কৰাম হয়তো হাই লেভেল ইনকোয়ারি কৰাই চাম কি বস্তুটো কি আছে যেটি সঠিক আছে কিটো হ'ব আপোনাৰ কথাটা যদি ঠিক আছে আপোনাৰটো হ'ব হয়তো মই পুৰা নাজানো কথা বাট জানিব পাৰি দিস ইজ द अप्रोच इन पब्लिक लाइफ यही क्वेश्चन अराइज करता है आपको इंटरव्यू में सेम सिचुएशन यू आर हैंडलिंग यू नो द इंटरव्यू आल्सो यू आर हैंडलिंग यही चेक करता हो द क्वेश्चन इज दैट द पर्सन इज चेकिंग यू कि हाउ यू बिहेव इन सच अ सिचुएशन. Because when you go in service, actually you will face this situation. You know, there will be situation where public will say, "बताओ मुझे ये वाला चीज मेरा ये वाला भत्ता कब मिलेगा?" उनको नहीं पता कब मिलेगा, आंसर नहीं मालूम है. Then what you do? झूठ बोलोगे? नहीं, झूठ बोलोगे लात खाओगे. वहाँ भी और बाद में भी सरकार की बदनामी होगी, है ना? So when the board also asks you something, the same thing, you will actually face a situation on the ground. The board asks something you don't know, you know something about it. They ask you कि you know the public के पास एक घिराव के लिए मेरा ABUB का रिजल्ट कब आएगा? आजकल बच्चा लोग ये सब बहुत पूछता है हमारे पुलिस का एग्जाम दिया रिजल्ट कब आएगा? तो यार सुना तो हूँ मैं कि कुछ आ रहा है प्रिपेयर होना बट डेट एग्जैक्ट नहीं पता है. इमान दिन अपनी वेट करी सा अपमान आरो वेट करी लोग किया যদি কৰিব পাইছে ৰিজাল্ট তো আহিব পৰীক্ষা হৈছে তো ৰিজাল্ট আহিবই আহিব অলপমান वेट কৰি আমি শুনিছো কিছু চলি আছে হয়তো বহুত সোনকালে আহিব পাৰে অলপমান वेट person will be happy but you say মই না জানো তা কোনে জানে. Isn't it? The question will come, the person will become agitated. What nonsense are किस लिए तुम आके खड़ा हो गया यार मालूम नहीं है. भागो यहाँ से. You don't know then why are you standing here? Same situation arises when you go to the interview, isn't it? The people will ask you, कि tell me about this. And you say no, I don't know. You know I don't know. Man ठीक है, you don't know it's okay. But then what? आशा का किरण तो देखे जा भाई. You are in public service. You cannot say something ना हो. ना हो इतना ना हो कितना हो. किन्हें का हो की कोरिले हो. Because जो administration आशा पे चलता है, hope पे चलता है, this they cannot be absolute no, they cannot be absolute yes. So that you have to understand. कि if I say I don't know about this, if you have heard, yes I have heard about it, but I'm not very sure. I have to find out. But as of now, sir, I'm not in a position to really speak about it. I may not be a speaking sense when I speak about my, limited knowledge about the topic. So that has to be my approach. If I know, then also I say, sir, as per my understanding and my knowledge till now, whatever I have read or understood about the subject, कि whether Russia has attacked Ukraine, what do you think? Is it correct or wrong? So you can always know, sir, नहीं Russia तो बेया कोरी से sir, इटू तो ठीक कोरा नहीं, इटू होले ना होबो, ले लड़ाई शुरू हो गया वहाँ पे. So you are not there to speak like a statesman. You are there as a bureaucrat who knows how to handle the situation. So my approach would be, as per my understanding, Ukraine did something which ignited this passion in Russia. They wanted to join NATO, and Russia did not like. They felt that it is not proper. So they responded in their national interest.
But Ukraine being a smaller state, I think there could have been a better way of dealing the situation, where maybe other states could have come and made Ukraine understand the geopolitics of the area. I mean, when you speak like that, bande ko malum hai. You know, ek to pata bhi hai, dusra, he knows how to communicate his thing, and in a balanced way. But I'm not being balanced politically. I am being balanced intellectually. Understand? So don't try to be tactful. Don't try to act smart when you go to an interview. You be honest about yourself, because it will be never that you know 100%, and it will be never that you don't know anything about it. Because you are an educated person. Generally, what the board speaks, kuch na kuch aapko pata hoga uske baare mein. So the approach has to be like this. Got it? As of stammering ka jahan tak aapne kaha tha na ki stammer is not a problem. Till the time you can communicate, it is okay. है ना? You can say, sir, I have an issue with my speaking abilities. I'm trying to get some cure of this. I'm trying to get myself trained on this. It is very late that I have realized this, and over time I'm working on this disability of mine. But please bear with me. I have this issue, and they will believe me, they like it. You can always say, please bear with me. I have a problem with stammering. Or I have a problem with my language. So allow me to communicate my idea in the best way possible which I can, and I assure you that I am working on this weakness part of mine, and I'll be very soon, I'm sure that I'll be confidently speaking before anyone. So this has to be your approach while stammering. If I have a problem, I can say that, look, I have a problem, this is my issue, I'm working on it. But you should not say, I have an issue with this, yeah, you have to deal with it, I cannot do anything. Ye nahi kar sakte. You have to say, I have an issue, I'm working on it. I'm working on it. If you say something, they say something, and you should have known, तुमको इधर तुम एग्जाम देने आ गए, तुमको ये भी नहीं पता है, तो मुझसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो एक मैडम थी, मैंने कहा मैडम ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता है, उसमें ये भी नहीं पता है, you are right, and there are a lot of things which I don't know. I do not claim that I know everything in this world. So yes, but now you have brought in the topic, it sounds interesting to me, and yes, I should have known this, which I don't know, and I'm definitely interested. I'll go back and check. ये क्या चीज़ है? So the person thinks, okay, the person has taken a note of his deficiency. The person has understood कि इसको नहीं पता है, so he has an idea, he wants to go back and check. It's not that नहीं पता, बस नहीं आता, बस जाओ. ये जो rigid attitude bureaucrats में not acceptable. You should study the personality of a good bureaucrat, a successful bureaucrat whom you consider is a good person or a good bureaucrat, not any bureaucrat, and then try to understand his personality, how he deals, what is his approach or her approach, and then you try to understand what the public needs, because you will be a public servant, you will be responding to a customer. मैं दुकान में बैठ गया, दादा मैगी है तो ऐसा नहीं देंगे क्या? हम तो मालिक हैं, नहीं देंगे. ऐसा होता है पब्लिक सर्विस में भी कि भाई दो मॉनिटर सर्टिफिकेट को गए थे ना हो जाओ, मानो इनको ना भी सर है ना. They want, you also don't want public service like that. So your approach before the board should be in a way that they understand that once I post madam as an ACS officer or an APS officer or whatever service, or sir को post करूँगा as an APS or ACS officer, they will actually do what the society needs. They will respond to the customer's demand. That's why I said, you ask me first and then I speak. Let the customer ask for क्या चाहिए आपको, नूडल्स चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, बिस्किट चाहिए, आपको चाहिए दाल और मैं आपको मैगी बेचना शुरू कर दूँ. So that doesn't match, ना. So this personality of yours should be reflected in those whatever minutes you get of life, right? ये चीज हो गया. और इसके अलावा what are questions था? Tell me about yourself. Huh? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Look, these type of questions might come. You can just briefly tell. Don't गाना नहीं गाना उसके बारे में कि आपके बारे में क्या है. You can your name they know. आपका नाम तो मालूम है, उसके सामने लिखा हुआ है. जैसे आप सर I am so and so बोलने का. What's your name by the way? नीलकमल बोरो. नीलकमल. Right. You cannot go sir I am नीलकमल बोरो. तो बोले तो पता है मुझे. वो पता जो नहीं पता है. Isn't it? So when a person asks you, tell me about yourself, they're interested to know what is not written on records. Always remember that. Don't tell them what is written on the records. So you tell, I'm a black belt in karate. I'm a third-time black belt, 3 times national champion, a lot of things. They didn't ask me a single question of that. तो पता था कि इसके बारे में पूछते ये पूरा इसके एरिया में घुस जाएंगे हम, जो मर्जी बताएगा फिर. So they didn't ask a single question. मैं बोला था कुछ तो पूछो, नहीं पूछा होता. They didn't ask a single question. So as of this, I'll tell you first, I'll come to this, Nilkamal, कि you study your biodata well. Nilkamal, they will ask, first Nilkamal, your name is very fascinating, yeah. So do you have any inclination towards BJP?
Kamal है नाम है इसका. They will ask questions like that. Are you BJP minded? That's don't tell no. That's again wrong. You should not reveal it. The moment you say that I'm not BJP minded, अच्छा तुम कांग्रेस minded हो. वो भी नहीं तो फिर कौन सा minded? AJP minded. वो भी नहीं तो अच्छा तुम आप वाला minded हो. So they will try to tackle you on that. So never ever disclose, certain things which will drag you into more controversy. So they ask, if they ask Neel Kamal, तुम्हारा नाम है Neel Kamal, so it's a simple thing which comes to my mind. अच्छा, your name is Kamal. Good. So anything regarding BJP, any fascination? You say no, sir. Then minus marks. So it's not about किसका government. It's not about that at all. But they will say that this guy has not been able to handle my point. So once you say Kamal, so you can always come up with a lot of things about Kamal. What is Kamal all about? And you can say, yes sir, जब मैं पैदा हुआ था तो I did not know whether my parents had BJP in mind or not. You can say like that. क्योंकि तुमने तो नाम रखा नहीं है. मुझसे पूछा कि भाई तेरा नाम नील कमल है, तो मुझसे बोला आनंद नाम है. अच्छा, राजेश खन्ना से इंस्पायर्ड है क्या? तो मेरे से पूछे मैं बोल सकता हूँ. You never know sir, maybe my father was inspired by Rajesh Khanna. And when I was born, and he might have thought that I'll become like Babu Shai करके मैं भी बात करूँगा वैसा. तो उनको अच्छा लगा होगा, रख दिया नाम आनंद मेरा. So things like that. So when they ask you a question like this, so this is your approach. I'm telling you. Then they will ask you about suppose which god your name is also used for one god. इतना डिटेल में पढ़ के जाओ अपने बारे में. अगर आपका नाम है तो पता है किसी भगवान का भी नाम है. अब अगर उस भगवान का नाम आ गया, अब नीलकमल कोई भगवान है क्या? नीलकंठ तो है शिव जी. नीलकमल का है. But this the नीलकमल नाम का मूवी आया था, पता? There's a movie. So who was the actor? Remember? I said, I don't remember. No problem. There is a very popular movie about that. I'm just talking about this general scenario. I can start like talking like to you like this. Then you might say कि वो कौन देखा था? राजकुमार, जानी was राजकुमार. This is राजकुमार. राजकुमार का असली नाम क्या था? राजकुमार के और मूवीज देखे हो? देखो आपके नाम से शुरू हुआ, बात कहीं और चला गया. मूवीज देखते हो क्या? If you have given interest में, yes, your hobby is watching movie, then they'll go to movie. Okay, so have you watched this? So your interest is movie, or you have not watched Neel Kamal, which is your name only. What interest do you have in movies? You understand? They can go these type of questions. इस line में जाता है. Okay, so beware of that. If you have written that I've studied in a particular school, so why did you not? ये school में तो मैं उस एरिया, अरे यार उस एरिया में तो वो भी school है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ा? उसने क्यों पढ़ा? You should be ready. यार सब मैं थोड़ी एडमिशन पापा ने कराया था एडमिशन. हाँ, जो भी अब मुझे लगा शायद पैसे नहीं रहे होंगे उस बड़े स्कूल में पढ़ाने के, इसलिए इसमें पढ़ा दिया. Things like that. With your name, like do you support NDFB? They'll ask questions like this. है ना? Don't आपका मन में ऐसा गुस्सा नहीं आता है, कोई आपके उसके बारे में बोलता है. Don't you feel like you are going to जंगल चला, क्या करना है इधर? कैसा यूथ है तो they'll push you, they'll prick you to speak something nonsense. You understand? क्या लड़का है तो यूथ इतना बढ़िया शरीर लिया, you should go to jungles. Don't ever think like that. आज फिर आपस में बात करेंगे. पर आजकल का लड़का लोग पता नहीं क्या होगा. जोशी का बात. अगर तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो सीरियस हो रहा है. मैंने सर नहीं सर मौका मिलने से जाएंगे. तो मगर भाई नहीं जाएंगे. This is one example. I'm just trying to tell you a situation where the board tries to do all these things. They'll speak to you and they'll speak among themselves. And they'll create pressure upon you by speaking among themselves. Then you take it seriously. Oh yeah, कमजोर समझ रहा है. Then you should be ready with that. If you have done some work somewhere. अबे टाटा स्टील में काम किया है. तो टाटा स्टील में काम किया तो यार टाटा स्टील में कहाँ काम किया, क्या काम किया? तुम्हें लगता है कि टाटा जो थे वो ठीक है या रिलायंस वालों का बेहतर है? Then they can talk about that. तो फिर टाटा से कोई फैसिनेशन था क्या? टाटा में क्यों गए? अदानी अंबानी के बस क्यों नहीं गए? अबे anything, any damn thing they can ask. आप टाटा स्टील का पूरा रिकॉर्ड पढ़ के जाओगे, they'll not ask anything about Tata Steel. They'll ask about why Tata have kept their symbol like T, like this, what their symbol means. Do you have a Tata vehicle? घर में सब टाटा का ही है क्या? वोल्टास का AC यूज करते हो क्या? You understand? Don't always think that they will ask you only the standard questions. Just be prepared because you will always know the standard questions. What I'm telling is out of the syllabus. Okay, so you'll always be very, very well prepared. If you say that you like movies, you like your hobbies, reading movies, you must have all the answers for movies. Definitely, आपने जिंदगी में सारे movies नहीं देखे.
You can say, मैं सर डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखता हूँ. Then they will ask some movie about IPS के बारे में देखा है, नहीं देखा होगा. तो आपका आंसर क्या होगा? सर that is interesting. If you are mentioning it must be a good movie, sir. सर आपने देखा है क्या? तो हाँ मैं सर अच्छा सर that sounds very good, sir. I would love to go and watch it, man. I definitely watch it, sir. I've noted I'll watch this. वो तो आपको पकड़ रहा था, आपने उसको उसमें अपॉर्चुनिटी खोज दिया. यार थैंक यू, मुझे आपने बताया मूवी का नाम, सर ये कैसे मिस हो गया था मेरे से, मैं जरूर जाके देखता हूँ. तो दिस काउंटिंग की तो मूवी देखने का हैबिट है, तो बोलता है कि मूवी देखा ही नहीं. क्या आदमी है, बोले सर सच्ची है तो मिस हो गया मेरे से, इसको तो मैं जाके देखूंगा पक्का सर. थैंक यू सर. You understand how you take it to yourself. He tried to catch you and you have actually turned it into an opportunity. Thank you for introducing me. So like this they will ask you a lot of questions. Why to join civil services? मुझे क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना भाई? सर देश का सेवा करना है, सर मैं देश को सुधार दूंगा, मैं ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा. बोलेगा बकवास करता है बकवास. जा यहाँ से, तेरे जैसे कितने आए हो गए, हम भी सिविल सर्विस ज्वाइन किया था, हम क्या करके बैठे हैं, अब तुम आया देश को चेंज करने वाले, है ना? तो दे नो कि ये फर्जी आंसर है, ये पूरा फर्जी आंसर है. जो कहते हैं देश को सेवा करने के लिए आया, देश का सेवा बोलेगा क्यों? रिक्शा वाला वो देश का सेवा नहीं कर रहा है क्या? तुम अकेला सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना देश का सेवा करने के लिए? जो लोग फार्मिंग कर रहा है वो क्या देश का सेवा नहीं कर रहा? वो किसका कर रहा है? खाना कहाँ से मिलेगा? देश का जवान जो लड़ता है वो खाना कहाँ खाएगा? अगर फार्मर खेती नहीं करेगा तो क्या वो देश का सेवा नहीं कर रहा है? वो जो एस्ट्रोनॉट जो जाके ऊपर में काम कर रहा है वो देश का सेवा नहीं कर रहा है? जो साइंटिस्ट हैं जो कि सारे टेक्नोलॉजी, वो क्या देश का सेवा नहीं कर रहे? सिविल सर्विस बनना पड़ेगा, ACS APS बने बिना IAS IPS बने बिना आप देश का सेवा नहीं करते. और अगर आप कुछ नहीं बने तो क्या आप देश का सेवा नहीं करेंगे? If you are a teacher, what do you think? You will not work for the country. Then what is your idea, man? Why are you so confused? They'll come with this. अक्सर लोग ये गलती करते हैं. They speak about देशभक्ति, they speak about being good ideals. You know, if you are really ओतप्रोत है बोलिए, इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है. But if you ask me क्यों ज्वाइन किया सिविल सर्विस, मेरा सिंपल आंसर है यार बचपन से ही प्यार हो गया था पुलिस वालों से. पुलिस बनना था मेरे को. बाद में पता चला कि इसमें IPS बन सकते हैं. I believe कि मेरा जो जिंदगी मैंने पैदा हुआ हूँ, my personality, the type of person I am, I can realize my own life best by joining this service. You know, this I think I'll be most happy and satisfied personally by joining the service. And the good part is that service will give me a direct opportunity to actually doing public service, and I can do it visibly. मैं देश के लिए visibly और direct काम करूँगा ना तो इसका एक अलग kick मिलेगा सर. वो किक के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. वो जो मजा मिलेगा वो उसके लिए ज्वाइन. पैसे तो कहीं कमा लूंगा. I'm not joining for money. You know, somebody told me, मतलब one of my critics, he told me, अबे इसको इतना हीरो क्यों बनाता है यार? इसके लिए तो सैलरी मिलता है इसको. तो पैसे इसका तो काम ही है करने का, है ना? That's a critic's way of understanding the civil servant. ये तो तेरा काम है देशभक्ति यार. इसके लिए तो you signed up for this. You are getting money for this. But if you have actually signed up for civil service like a job, you will be an utter free. जो आदमी को ये लगता है कि सिविल सर्वेंट नौकरी कर रहा है ना, वो भी कंफ्यूज्ड है, और जो सिविल सर्वेंट को लगता है वो नौकरी कर रहा है वो भी कंफ्यूज्ड. You know, so the idea is if you are joining civil services, for me when they asked me why you want to join this, I said exactly what I am telling you. This question was asked to me. So why want to join this police service, man? क्यों सिविल सर्विसेज में क्या करोगे ज्वाइन करके? I do. सर मुझे तो बचपन में प्यार हो गया था पुलिस वालों से. तब तो मुझे पता भी नहीं था ये सर्विस है, जॉब है, नौकरी है. मुझे वैसा बनना था. अगर सर वो सर्कस में काम करता मैं सर्कस ज्वाइन करता. You know, but because later on I realized he is part of the government, and I decided I joined government. Then I came to know he by being the senior most police officer I can deliver the best, and I can actually gather the best satisfaction by joining at the senior most post. तब मुझे पता चला IPS. Then I decided I'll join IPS, and this is mostly to satisfy myself. This is mostly to live my own personality. This is mostly to live my own aptitude. You know, and in the way, on the way उसको ये भी पता चलता है कि this is a good opportunity यार. एक पंख दो काज. मेरा अपना काम भी होगा, मेरा मजा भी हो रहा है, साथ में पब्लिक का भी सेवा हो रहा है. And I'm directly part of the government. I'm directly taking care of administration. The whole resources available with the administration comes to me. And I sign the papers for like 1 million आदमी का ना चेंज, जीवन चेंज एक सिग्नेचर में. यार सर क्या किक मिलता सर इससे, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ. पब्लिक का भला हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. I'm not joining कि मेरे करने से तुम नहीं करो, कोई और करेगा यार. तुमको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोई करेगा. Don't say कि I'm joining for public service. हो सकता है मन में वो फीलिंग होता है, you feel good about it, but that cannot be an idea, है ना?
तो अगर हर आदमी अगर इतना ही देशभक्ति का ज्वाइन, तो अब आपको बीएसएफ का जवान बन के जाके बॉर्डर पे लग जाए, उससे बढ़िया देशभक्ति नहीं होगा, है ना? तो that's the question. Okay, so when you are asked why to join civil service, my answer is कि मुझे मेरा aptitude, मेरा personality सूट करता है इस टाइप का जॉब से, मुझे इसका काम करके मजा आता है। I feel कि I will be more satisfied doing this type of work. मुझे बिजनेस में मन नहीं लगता सर, अपना दुकान खोलने का इरादा नहीं है, कंपनी बनाने का इरादा नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में वो फील मजा नहीं आता है। इसमें जो आता है सर, पूरी का पूरा पब्लिक का जो रिसोर्सेस है वो मेरे कमांड में रहेगा। आप सोचो सर, सर आप सोचिए, I'll be the DM of a district and I'll get all the money of the resources at my command. I'll decide कि मेरे जिले का डेवलपमेंट कैसे होगा, I'll be directly participating in that. मेरे देश का फ्यूचर क्या होगा, मैं डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में सजेस्ट कर सकूंगा, I'll be part of it. मेरे सारे के सारे लोग कितने खुशहाल रहेंगे नहीं रहेंगे, इसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होऊंगा सर। ये कितना बड़ा किक है, डोंट यू थिंक? That is what drives me to join civil service. You know, that's so I did not speak कि मैं पब्लिक के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ज्वाइन कर रहा हूँ सर, मुझे मजा आएगा ज्वाइन करने, I'll be satisfied person. That's why I'm joining. पब्लिक का भला और अच्छी बात है, you know. You understand? I hope this question is clear for everyone. है ना? Now you frame your answers yourself. You don't speak what I have spoken. This is my way of understanding. है ना? मैं जो भी करता हूँ ना, मैं believe me आप लोगों के पसंद करने के लिए नहीं करता हूँ। The moment I start playing to the gallery, I'm finished. बार बार बोलता हूँ, you know, अब देखिएगा मेरे कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करता हूँ, लोग कमेंट करते हैं, I don't even reply. It's not that I'm not replying out of ego. I don't read them यार, मैं देखता भी नहीं हूँ कि किसने क्या कहा। मैं आपके लिए थोड़ी डाला हूँ, मैं तो अपने लिए डाला हूँ। इतना पेन ड्राइव में जगह नहीं मेरा रखने के लिए, तो उस पर डाले बाद में। अभी कल ही पे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, अपनी फोटो से डाउनलोड कर करके उधर से I was putting in the presentation. कहाँ खोजूंगा वो फोटोज कहाँ गए? You know, so this is my way of expressing. I'm expressing myself. I'm sharing with my friends and family. If you like it, well and good. If you want to comment to something on that, well and good. If I need some time, I'll be feeling happy or not happy. But I am not doing that to like it. I'm not doing that to comment on it. I'm not doing that to share it. This is what I'm speaking about public services. I'm not doing my work कि मेरा senior मुझे मेडल लगाएगा. I'm not working कि मुझे को कोई सर्टिफिकेट देगा, साइटेशन देगा. मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. जिस दिन अच्छा लग रहा है खत्म हो जाएगा, टांग दूंगा अपना वर्दी, है ना? So अपना आप पर्सनल चीज के लिए करते हैं, because your motivation and your drive has to be internal. If you are driven externally, you will not go long. अगर आप पेट्रोल को ऊपर से डालते रहेंगे, गाड़ी लंबा नहीं चलेगा. पेट्रोल अंदर रखना पड़ता है गाड़ी, तब गाड़ी चलता है, isn't it? आप ऊपर से पेट्रोल डालते रहिए, उसका जो इंजन के ऊपर से कितना दूर चलाइएगा? पेट्रोल को अंदर लेके जाना पड़ता है, तब गाड़ी लंबा जाता है, isn't it? तो ये जो आपका पेट्रोल है, कुंडली जो होता है ना, कुंडली नहीं क्या, कस्तूरी कुंडली बसे मेरे ढूंढे बनना है, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखेगा। जैसा कबीर का दोहा है, तो जो एक खुशबू होता है, जो मृग होता है ना, वो क्या बोलते हैं, हिरण, तो उसके नाभि में ना, नेवल में वो खुशबू रहता है और पूरा घूमता रहता है। ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? पूरा जंगल घूमता रहता है, खुशबू ये खुशबू आ कहाँ से रहा है, कहाँ से मिल रहा है? उसके अंदर ही है वो, उसको पता ही नहीं है ना? तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, मृग डियर वो बन में घुसे। ऐसी घटी घटी राम है, ऐसे राम भगवान के बारे में कि आपके मन के अंदर है और दुनिया को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी हो गया आपका मोटिवेशन, आपका जो थ्रिल है लाइफ का। लोग कहते हैं ना सर डिमोटिवेट हो जाता हूँ प्रिपरेशन करते वक्त, सर मूड खराब हो जाता है प्रिपरेशन करते वक्त, क्या करूँ? The problem is you are searching your motivation outside you. You don't need any Tom, Dick, Harry to motivate you or inspire you. You are your own motivator. Your goal is your own motivator. Your desire is your own motivator. Okay? When you don't feel like study, just don't study. वो टाइम वेस्ट मत करो उस पर, जाओ जो मर्जी आता वो करो। थोड़ी देर बाद अपनी कीड़ा काटेगा, अबे नहीं यार एग्जाम है, अरे नहीं पढ़ना, अपने आप से वापस आओगे पढ़ेगा। Understand? So your motivation has to be internal. Similarly, when you go and speak about in the interview, so you should not try to support your logic by external factors. मेरे पिताजी गरीब है, मेरी माँ ने घरों में काम करके मुझे पाल बड़ा किया है, मेरा मिट्टी का घर है सर, मेरा घर छूटा है, इसको मुझे फैमिली का चेंज करना है, इसके लिए मैं बनना चाहता हूँ ICSAP में। देखने से बहुत बड़ा खाऊ बनेगा, है ना? ये जितनी अपनी कमियां गिना रहा है, ये खुशने के बाद ये सब यही सब ठीक करने वाला है। पब्लिक का कुछ नहीं करना सबसे पहले ये, बिकॉज ही इज मोटिवेटेड, इसका मोटिवेशन एक्सटर्नल है। ही है ना, ऐसा नहीं हो सकता
he has to be inside. But I said about civil services, यार मुझे अच्छा लगता है, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, अब इसका कोई कारण थोड़ी है, लगता है तो लगता है, किसी से प्यार हो गया तो हो गया यार, है ना, दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की, है ना, चाहे उसके सामने आप ऐश्वर्या राय को खड़ा कर दीजिए, आप उसको सुष्मिता सेन को खड़ा कर दीजिए, और लड़कों में भी जो भी लड़के होते हैं उनको खड़ा कर दीजिए, जिस पे मन आ गया यार, बस सिविल सर्विस अच्छा लगता है मुझे, बस अच्छा लगता है, अब इसका कोई रीजन लॉजिक नहीं है, अच्छा लगता है। तो ये चीज आप बोलेंगे नहीं, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा तू बड़ा हो गया एसीएस बनना, है ना, मेरी माँ ने मुझसे प्रॉमिस कराया था कि तुझे ये नहीं होता है ऐसा। दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन बी अगेन दिस एक्सटर्नल मोटिवेशन हैज टू बी टेकन इनसाइड यू, इट हैज टू बी टर्न इनटू एन इंटरनल मोटिवेटर। ये जब हो जाएगा देन ओनली व्हेन यू स्पीक इन द इंटरव्यू दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड। एंड एज आई टोल्ड यू वी हैव जस्ट दोस 5 मिनट्स पहले के शुरू किया, डोंट थिंक 25 मिनट इंटरव्यू चलेगा, वो बोर हो गया ना 5 मिनट में कौन बिठा के माथा खाएगा अपना, नहीं चलो यार हो गया निकलो। अगर आपसे पसंद आ गया तभी 5 मिनट में भेज देगा यार, बंदा समझ में आ गया, बंदी समझ में आ गई, यही चाहिए हमको, इसको ही बनाना है, ACS APS ऐसा ही चाहिए हमको। If they understand this, then they will not waste time with you. They will not waste their time, they will not waste your time, they will not waste the other candidates' time for waiting. So never go with a closed mind. When you go with an open mind. You go as if you are going to interact with your seniors. Don't go at interview, panel, board, members, chairman. You're just going to interact with your seniors. वो टाइम की बात है यार, वो आपसे पहले पैदा हुए थे, पहले ज्वाइन किया है कि नहीं, आज आप ज्वाइन करेंगे क्या बात है, इसमें थोड़ी नहीं कि उनके पर लग गए हैं थोड़े 30 साल, ऐसा है नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो हैव दैट एटीट्यूड इन, बट इट शुड नॉट टर्न इनटू ईगो, इट शुड नॉट टर्न इनटू लाइक यू आर शोइंग योर हाई टाइप का ऑरा दिखा रहे हैं, वो भी नहीं। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर, मतलब ये रहेगा, व्हेनेवर यू आर इंटरनली इंस्पायर्ड, ह्यूमिलिटी अपने आ जाएगी, यू डोंट हैव टू लर्न ह्यूमिलिटी। Humility, it is or it is not. There's nothing in between. So, मैडम आप इधर भी बैठ सकते जगह में। So, you understand. So, this is how I believe कि you should approach to your interview should be such that it is completely positive, that you went there to get selected. And remember that the interviewers who are sitting are there to select you. They are not there to reject you. They are actually searching for the best. They never want to reject anyone. उनका बस चलो सबको सेलेक्ट करें, सबको मार्किंग देते ना, they mark everyone. अब it becomes comparative, that's why it becomes the merit list now. Okay, so they are wanting you to impress them. And one more thing, never think that you need to know a lot for interview. You must know the basics. You have proved your merit in your written paper. आपने अगर क्वालिटी नहीं है तो आप इंटरव्यू पहुंचेंगे ही नहीं। आपने मेरिट है, आपने क्वालिफाई किया मेंस तभी तो इंटरव्यू गया, तो ज्ञान है, आपने ज्ञान का टेस्ट नहीं होता। Okay, nobody is testing your gyan, and if some interviewer is thinking that they will test your gyan, I'm sorry, the interviewer needs to be, something has to be done with that person, because you've already proved yourself. Yeah, you're qualified prelims, you're qualified mains, now you go for interview, so you are already a person who is having some knowledge base, otherwise you would never reach the interview. Now when you reach there, reach with this confidence that I have qualified the prelims man, I have qualified my mains, I'm here to interact with you and to understand and convince you. Yes, I am the one whom you should take. You are there not to prove yourself, you are there to convince the person, yes, I am the one. You should understand, you should not miss me out, man. मिल गया हूँ मैं, मुझे ले लो. It's just matter of time that आप हमसे पहले select हो गए, आप उधर बैठे, मैं इधर बैठा हूँ. But ये सब बातें बोल मत देना चाहिए. So this is an attitude building which I am telling you. Okay, this has to be your approach and attitude. Be confident. Be confident about your personality. Be confident about your persona. Even if you are fat, heavyweight, they may ask, man, you're big. That shows क्या होता है. Interviewer हम लोग बोले कि if you see a fat person, if you see a obese person, the idea is not कि देखने में कैसा लगता है. It speaks about your habits. It speaks about your priorities in life. It speaks whether you respect your own body or not. It speaks how conscious you are about your life quality. It speaks about how disciplined you are. It speaks about lot of things about that. वो एक assumption होता है जो board can take. यार ये बंदा अपना weight संभाल नहीं पा रहा है, तो देश कैसे संभालेगा? ये एक assumption है. But still if you are confronted, यार तुम इतना weight कैसे बढ़ गया, इतना तुम्हारा कम उम्र में? सर वो पढ़ाई करते ज़्यादा खा लिया था, तैयारी के टाइम में बढ़ गया सर. I had a friend, इस SP झारखंड में है, SP बोकारो है, तो चंदन.
तो यू नो ही गेन क्वाइट वेट, तो अभी एकदम फिट है, अभी वो 15-20 किलोमीटर अभी भी रोज दौड़ता है, एकदम फिट है। तो उसने भी सिखाया था मुझे, बोलता है कि साहब जहाँ जाऊँ वहीं पूछता है अरे उम्र वैसे बढ़ क्यों गए बाबा, फैल क्यों गए, वो तो ये यूपीएससी फैला दिया है। यूपीएससी की पढ़ाई में पढ़े हम तो पढ़ते हैं तो टेंशन होता है, टेंशन होता है तो खाते और खाते तो मोटे होते हैं, तो दैट वाज द पॉइंट। बट फिर आप कैसे ट्रेनिंग करोगे, बोलेगा ट्रेनिंग तो करेंगे, आप कराएंगे ना ट्रेनिंग हमको, आप कराएंगे हम करेंगे, नहीं करेंगे तो निकाल दीजिएगा। तो दैट इज हिज अप्रोच, ही इज अवर ऑल गो गेटर अबाउट हिज वेट आल्सो। तो ये अप्रोच होना चाहिए। आपको कोई बोलेगा यार आपके तो बात नहीं है यार, आपसे हैंडल हो पाएगा, कैन यू विल यू बी एबल टू हैंडल इट, you know, things like that. So they will ask, and how you respond to it, how you respond, and that is something you have to innovate on the spot. That is something which you have to come up with an idea which is convincing, at the same time which does not sound derogatory. ऐसा भी नहीं हो चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा, ऐसा भी नहीं साउंड होना चाहिए। बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदे में एक एनर्जी है, बंदे में एक डिसिप्लिन है, यू नो, बंदे में कुछ कर गुजरने की चाहत है, ये बंदे में डायनेमिज्म है। ये सारे जो क्वालिटीज बोर्ड मेंबर्स को दिखते हैं ना, एंड ये कि बंदा सिंसियर एंड ट्रूथफुल है, व्हेन ये चीज समझ, बंदा मींस बंदी आल्सो, ओके। तो व्हेन दीस क्वालिटीज आर सीन बाय द इंटरव्यूअर, nobody will dare to reject you, you know, nobody will give you the maximum marks. So now you just have to go and fetch your marks. When you go, as I told, whenever you face an interview, whosoever, whatsoever, APSC का no, private sector का, corporates का, go with an identity and go with an attitude of convincing your person. आपको marketing करना हो तो उतना देर में, आपको अपने आप को बेचना है, you understand? You should be the best salesman for those 5 minutes or 15 minutes or 25 minutes or whatever it is. Okay, so you have to be the best salesman. As of now, for me, like whatever time we had, you know, I tried to sell myself well. Okay, so this is again, as I told from the very first, देखो मेरा tempo वही है अभी तक, because क्यों मेरा tempo वही है, जब पहला शुरू किया था अभी तक बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, isn't it? If you have noticed it, कैमरामैन साहब अपने कैमरा में बता पाएंगे, if you see, I've got the same pitch, ऐसी जा रहा है, ऐसी जा रहा है, ऐसी जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, why? I don't know which is my last moment, you know, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी, right? So if that is your attitude, if that is your approach in life, believe me, nobody can break your spirit. है ना, आपको झुकेगा नहीं वाला, वैसा चीज होता है। तो झुकना is not about झुकना to anyone, झुकना to your own spirits. Your spirits won't bow down, you know, but that attitude has to get into your mind. So when you sit in the interview like that, when you complete your interview, you should be thankful to everyone, you know, you should greet everyone. It's a basic courtesies अब आपको सिखाने की जरूरत है। When you go, you know, be courteous to everyone, be nice, be gentle, you know, be observant. Okay, लोग कहते हैं मैं बोला से ऐसा है ना भाई, ये रुमाल गिर गया, अफसर झुकता नहीं, अपन झुकेगा, है ना? और दिस इज अ वेरी इडियोटिक थिंग ऑफ लाइफ यार, मतलब मेरा तो खाना गिर जाए मैं उठा के खा लेता। सो ऐसे नहीं होता, अफसर ऐसे नहीं बनते, और आपका जो एटीट्यूड अलग होता है, दैट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दैट विल डिफाइन योर पर्सनालिटी। इट इज योर वर्क एंड योर टास्क, यू नो, कंप्लीशन एबिलिटीज दैट विल डिफाइन योर पर्सनालिटी। रुमाल जमीन से उठा लिया तो आपका अफसर क्या स्टार मेरा गिर जाएगा क्या उठाने से? IPS का बैच उधर जाए गिर जाएगा, खोल लेगा मेरे से। If I talk to my junior in a nice way, is somebody going to demote me from SP to DSP? It's not like that. So this is the part of the personality, and you carry your personality with guts. You carry your personality and your truthfulness, your character with conviction. That is important. अगर आप बातों को सिर्फ बात करने के लिए, आप किसी को impress करने के लिए कर रहे हैं, तो you will never have that conviction in your eyes. I tend to get connected with people, you know. I tend to get connected. Why? तो दिल से बोलता हूँ यार, मैंने पढ़ के नहीं आया, कुछ डेविड अभी तक बता रहा था, डेविड को भी बता रहा था मैं कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, फिर बोला अच्छा यहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, फिर अच्छा हाँ इंटरव्यू का था, राइट इंटरव्यू का था, but I have not prepared anything, you know, because I know this is my topic here, I can always speak about that because I face it myself, I face it daily, I interact with people daily, but I ensure that what I speak to you comes directly from my heart. I do not want to tutor you with some so-called principles of interview, 5 principles, उसके 3 sub principles, उसके 2 sub principles. You know, ये सब करके you remember okay, point 1, 2, 3, 4. Believe me, when you go and they ask you कैसे आया, you be also thinking कैसे आया मैं, the way I was. So go relax, just relax, chill out. When you go there, be happy about yourself that you have cleared mains.
be happy about yourself that you are sitting before the, so if they ask you that, yeah, you seem to be very happy, what makes you so happy? The smiling. Sir, आपके सामने बैठा हूँ, sir, कम खुशी की बात है, isn't it? That's my answer. If there were people who asked me, मेरी स्कूल की टीचर थी, लंदन में, वो मेरे को एक बार बुलाई स्टाफ रूम में, स्टाफ रूम में बुलाई, अब बोल रही है दिखा के, ये तुमने ऐसा किसे लिखा, ये तुमने ये क्यों किया? I was like, so the woman is smiling. I'm telling something, was smiling. What makes you so happy? तो मैम आपने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया, I'm so happy about it, ma'am. तो बोले यार ये लड़का का क्या होगा? This is something which is truthfulness. I told her. तो मेरा ध्यान में हम किताब कहीं नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं तो इस बात से खुश हो रहा हूँ। स्टाफ रूम में खड़ा हूँ, सारी टीचर्स मुझे देख रही हैं, है ना? लड़के बाहर सोच रहे पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। So I'm so happy about it. So this is what, like for every topic which you come across, every you should have a genuine answer. And देखो ये बनाया हुआ answers नहीं है. This is not which somebody has told me, tutored me कि ऐसा बोलना है. ये naturally आता है. क्यों naturally आता है? Because मैं दिल से बोल रहा हूँ. तभी दिल से बोला था टंडन मैम को. कुछ अच्छा लग रहा था. ऐसी इसी बात को बोला कि there may be a situation. मुझे भी जैसे ना when I was going for interview, तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था. कुछ एक दोस्त थे तो वो बोलते अबे तुम ज़्यादा हंसना मत वहाँ जाके इंटरव्यू में. थोड़ा सीरियस दिखना. थोड़ा ये करना, वो करना. 50 ज्ञान दिया. मैं ठीक है. So I went smiling, kept smiling, returned smiling. And thankfully now still I'm smiling. So this is what, but this smiling, it carries a conviction. My smile carries a seriousness also. The smile does not sounds like, कोई मैं comedy कर रहा हूँ, comedy show चला रहा हूँ. It has its own value. It shows confidence. That is important. The smile, if your smile is confident, सब लोग अच्छी smile है आप. अच्छी नहीं होती, confident smile है. तो दांत उठा हुआ तो मेरा भी दांत ऐसे उठा हुआ है. कोई नहीं यार क्या है जैसा है वैसा है. तो this is something what I'm telling. If you are confident, if you are sure about what you are speaking, if you know why you are there, and if you are sure and you go with a conviction कि मैं आया हूँ तो देखिए नौकरी लेके जाऊँ. मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ करके जाऊँ. ये conviction के साथ जाइए और उठते वक्त सबको थैंक यू बोलिए. आज if you are selected सर मिलते हैं ट्रेनिंग के बाद टाइम से. ऐसा मत बोल देना. बोले थे ना कि सर ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं टाइम से. तो मेरे लिए तो ज़्यादा confident हो गया. Just greet them well, say thank you so much. Like it was really nice talking to all of you. I'm not telling to you, interview ko bola. Aisa, even when you leave, you can always say, he said it was like, really, I thought that I came for an interview, but it was like an educative session for me. Thank you so much for this the opportunity. They'll be like, wow, one thing, so वापस गया, isn't it? So this will come back when you talk with conviction. This will come when you actually know what you are doing there. आप टाइम पास करने नहीं जाता, this come. Right? So मोटा मेरे लिए से ये है किसी का कुछ बच गया घर में. Optional. I was political science. I am political science honors, and my history and sociology were my options. Okay. Nobody on the earth will ask why you did this. If they ask you क्यों लिया, तो मुझसे अगर पूछता I was ready with this answer. मुझसे पूछा जा सकता था. तो मेरे दिमाग में क्या आंसर था कि सर 3 साल political science पढ़ने और पक गया था. हाँ, पक गया था. But when my answer is that I studied 3 years of political science, and after that when I went to the UPSC syllabus, so I found a lot of things which are common, which I understood, but they were also covered in the part of other general studies things and all. And but somehow I was not getting the enthusiasm to continue studying the same subject, because over 3 years, somehow, yes, I may be wrong. I was wrong in selecting my optional in college. Maybe I should have taken this English. मैं अपनी आंसर बता रहा हूँ. हाँ, कि maybe I was not happy. Political science पढ़ तो लिया, but at the end of the day I was not very sure about the subject. Okay, plus UPSC के में there was a part of international relations with which I was not very comfortable. Okay, so that's a matter of comfort. And तीसरा, I said my answer, ready answer, which was not asked, was that I took it as an opportunity to study a new subject. Because anyways I will have to study. And I always had a fascination of history and sociology. So I thought this is the best opportunity to take the study for it. And it found this syllabus very comfortable for me. So because I had to crack the exam, I have to crack this exam. So the subject which keeps me comfortable, and the subject which makes me more confident, I will definitely work on that. And that's why I have chosen this. Engineers choosing history and sociology, public administration. Doctors coming and writing, exams in something like psychology and things like that. So it is completely okay. You can always say that, I was not confident with my, because when I was studying in college, I studied with
with a mindset of qualifying the exam, clearing my graduation, and somehow I thought that I am not very confident. And this, after going through the syllabus, I found this subject to be more, attractive. It was more attractive, and I thought that I can study this subject for quite some time. I found it confident. It gives me better confidence than what I have studied. So I think I took the subject. So that's it. Otherwise our question is scoring mat bolna. Scoring. There is no subject called scoring. Okay. Everybody knows that there is no subject called scoring. Look at it. There may be a time when geography के लोग काफी select हो रहे हैं. But that does not mean geography becomes scoring. Okay, because maybe more people are taking up geographies. No, it does not mean that. And there are certain subjects which makes people more interested. मतलब ना उसमें interest ज़्यादा create कराता है. So definitely it will give good results, and people having a background and good study material available है. ये सब भी आपके answers में आ जाए. Study material अच्छा available था. I have a guide who is guiding me on the subject. I was more confident with this subject, so I have taken up the subject. And things like that. But don't go by the idea that there is something called scoring or not scoring. Okay. At the end of the day, सब level हो जाता है. और कोई question बच गया? Sir, life of an IPS officer. Oh, life of an IPS officer. And sir, political pressure. But polar को है life of. Life of an IPS officer मैं बोलूँ तो it's a very interesting life. And दो type के देखो. एक तो है कि how you choose to make it. Okay, there are many IPS officers in the country, but and there are few who keep attracting you. So one is going by the normal daily course. ये जिंदगी है यार, पैदा हो गया हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो नौकरी करने के लिए जी रहा हूँ, तो उस कोर्स में जाता है तो mundane daily type का लाइफ होता है ना, that is not attractive. Everyday life is not attractive, So the way it happens. And then there is somebody like who goes on to do a lot of things, thinking कि यही जिंदगी का आखिरी पल है, वो सब कुछ करना चाहता है, तो वो लगता है कि यार लाइफ और IPS ऑफिसर अलग है, बट अलग नहीं है. मैं भी वही सब करता हूँ जो बाकी सब करते हैं. लाइफ में IPS ऑफिसर देखो क्या होता है कि यू हैव टू मेक टेक केयर ऑफ द लीगल व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो होता है, बट उसमें भी बहुत तरह का काम होता है, अलग अलग टाइप का जॉब प्रोफाइल्स है विच मे बी प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. बट yes, you will be in a leadership position. आप जहाँ भी रहिए आप, you will be heading something. Okay, you will not be like working for someone. You will be heading one department or other department or organization, unit, district, battalion, whatever it is. You will be heading something. IAS में IPS में दोनों यही फायदा है कि जहाँ भी रहे आप leader रहे. So that is one. Second is you get a lot of opportunity as an IPS officer to really help out people who are in need. एक डॉक्टर और पुलिस के पास वही जाते हैं जिनको तकलीफ होता है, और नॉर्मल आदमी नहीं जाता उनके पास. So you will always deal with people who are in problem, who need your help, who need some assistance, and then helping them gives you a great amount of kick and great amount of satisfaction. If you really want to do that, life of an IPS officer is very challenging on ground in the sense because you have to walk through real thicks and thins of life. Because government को जो direct झेलता है वो एक IPS officer या पुलिस वाला ही होता है. बाकी सब तो सचिवालय में पीछे बैठे रहते हैं, है ना. जब कुछ होता है सबसे पहले हम ही आते सामने खड़ा होता है. कोई नहीं आता है, आर्मी भी नहीं होती, वो भी पीछे. सबसे पहले हम ही आते सामने पुलिस वाले, ऐसा हाथ पकड़ के या शील्ड लेके या कुछ भी, जो होता है सबसे हमसे ही होता है. गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड अगर आप देखते हैं तो वो पुलिस ही होता है कि एनीथिंग, इफ एनी magistracy or the judiciary or the legislature comes out with an order that this has to be done, who gets it done? It's police ultimately, because we have to be on the ground. तो बोला नहीं करता हूँ, होगे कहीं के बड़े डीसी साहब, नहीं करता मैं आपका, क्या कर लेंगे डीसी साहब? कुछ नहीं कर सकते. एसपी साहब को बोलेंगे सर देख लो यार, तब एसपी साहब आकर बोलते बेटा क्यों नहीं होगा ये, तो बोले नहीं सर हो तो रहा है, कर ही रहे हैं. Isn't it? So this is also IPS में that feeling that you actually see things happening on ground. Even in development works many times ना, there are many interests and attractions and distractions जो development का काम नहीं होने देते. उसमें militancy हो सकता है, personal interests हो सकते हैं, syndicates हो सकते हैं, organized crimes हो सकते हैं. In those situations, IPS officers, if the IPS officer is a well-meaning IPS officer, he will get into it. He will resolve all the issues so that जो drain का पानी हो ठीक से flow. Okay, तो ये बहुत सारे उसमें गाट होते हैं जो खुलना पड़ता है. बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका रोड नहीं बनेगा, आपका ब्रिज नहीं बनेगा. लगता है पुलिस क्या किया इसमें, हटा दो पुलिस को, फिर देखो ब्रिज बनता है नहीं. कभी ब्रिज नहीं बनेगा, जीवन में नहीं ब्रिज बनेगा अगर पुलिस वाला वहां ना हो. He has to ensure that what has to be done should be done and must be done, and it should be done as per law. तो ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. पुलिस बहुत बार लोग देखने से सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर है, क्या है, खाली लिमिटेड काम है. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर इनटू एवरीथिंग. जब डिपार्टमेंट्स में भी ना
जब होता है ना कि यू डोंट नो किसको देना तो पुलिस को देना, वो अपनी निकाल के देता है ये एक चीज कैसे करके देना है. So it's the most resourceful department. Resourceful in the sense not making money. It is a very bad एक ये चीजें कि खुचरा करप्शन के चलते पुलिस बदनाम है, क्योंकि उससे भी पैसे से ज्यादा प्रॉब्लम है बैड बिहेवियर. When you go to police, generally find a bad behavior, you know, because अब उसके भी अपने issues हैं, you know, why this person is behaving like the way he is behaving or she is behaving. But at the end of the day, if you see, you know, the whole gamut of administration, the whole social setup, I believe, which is my personal understanding, there is a big role of police who keeps everything intact. Believe me, आप बहुत बार indirectly or directly जो पुलिस का रोल होता है सोसाइटी में, many times you don't even feel, it's like an invisible hand, like a father at your home. पापा आपको क्या ही करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. सर जो दिखता है माई दिखती है, माई खाना बना रही है, माई सब करिए सब, लेकिन पापा का पीछे में रोल क्या है वो आपको फील नहीं होता है. पापा को हटा दो फिर पता चलेगा क्या. तो पुलिस का रोल वैसा, आईपीएस का रोल वैसा है, you know, where we have to take care of everything while still being in the background at the most of the time, where we cannot come out and there डायस पे लोग बैठते हैं ना, आप देखते हैं जब, you know, तो पीछे काम बहुत पुलिस वाले, लेकिन पुलिस वाला ऊपर डायस पे नहीं बैठता है, नीचे खड़ा रहता है सिपाही बन, and डायस पे कोई और बैठा रहता है. And it comes to the face, the police wala is not the face. So this is the life of an IPS officer. You know, as an IPS officer, we get many of, अब हमारे सामने पब्लिक भी रहता है, हमारे सामने जो पॉलिटिकल सेटअप भी रहता है, हमारे सामने हमारा अपना हायरार्की रहता है, हमारे सामने अलग सिविल डिपार्टमेंट्स रहते हैं, हमारे सामने जुडिशरी रहता है, हमारे सामने मीडिया रहता है. तो इतने सब चीज़ों को आप लेके कैसे एक साथ आगे बढ़ते हैं. यू डू गुड फॉर दिस पर्सन एंड दैट, उसको बुरा लग जाता है. आप उसको संभालिए तो उसने आपका खिंचाई कर दिया, अब उसको पकड़िए तो इधर से टांग कोई और खींच के लेके जाता है. You know, तो all these pulls and pushes are there, and the good administrator is the one who knows how to respond to public interest. हम जब भी मैं बोला जो भी playing to the gallery, अगर IPS officers, if I start playing to the gallery, I'm finished. I'll not be able to perform. Performance, आप मुझे ताली बजा रहे हैं बहुत अच्छा, I'm happy मैं ताली बजा रहा है, आप मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं अच्छा लग रहा है, not bad. You are liking me, very good, thank you for that. But I'm not doing my work for that, brother. ये जिस दिन करना शुरू कर दूंगा उस दिन खत्म है. That's the life of an IPS officer. That's the life of most of the bureaucrats. You know that if you get something, well and good, but it is a thankless job. If you don't thank me, it is fair enough. I don't expect a thank you from you. But if you thank you, or you give some thanks to me, if you give a thanks to me, I feel good about it. If you acknowledge me, I feel nice about it. But I don't work so that you give me a thank you. Or you know, it's a thankless job at the end of the day. Last but not the least, IPS can, as an IPS as a service, आप देखा जाए तो उसमें personal level पे, you know, you get lot of, you know, what is perks, benefits, facilities. You know, IPS के life में ये है. But with that comes lot of workload, lot of gun battle, lot of pulls, pushes, जो कि आपको बाहर से अच्छा दिखता है. The moment you understand, यार मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा बंगला यार, हमको गाड़ी बस में चले जाएंगे यार, पर ये प्रॉब्लम हटा दो मेरे सर से. मतलब मुझे कभी कभी ड्राइविंग का मन होता है, पूछो आई कैन नॉट ड्राइव, मुझे बाइक चलाने का मन होता है कि और चलाऊं, चला नहीं सकता यार, ये फोन बजता रहता है, फोन मिस हो जाएगा तो वो खींचेगा ये खींचेगा, फोन भी अटेंड करना है. यू कैन गो टू अ मूवी, इफ यू गो टू अ मूवी देन देयर विल बी समथिंग कॉलिंग, ये चल रहा है वो चल रहा है, ये क्यों नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया. सो मेनी पुल्स एंड पुशेस. दिखने में लगता है इतना बड़ा बंगला है, हार्डली उसमें 2-3 घंटा रहने को मिलता है. You know, 24 घंटा में don't even get time to sleep. When you go, you are mostly either you are sleeping or you are in the bathroom. Don't even enjoy your bungalow. Then you go out. You got a big car. You don't realize बहुत ही 6 मिनट में कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, क्या गाड़ी है ये. Then you अच्छा अच्छा ये क्रिस्टा है क्या. Okay. It is like that. You think that इतना सारा bodyguard है, इतना सारा bodyguard नहीं होता. That is your team. Because me as a police officer, if I am going somewhere and there is an issue and I pass that issue without helping the people, वो तो feel bad. यार साला ऐसे ही चला गया, कुछ किया नहीं मेरे को. तो उसके लिए वो 10 लड़के साथ घूमते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पलट गई, हम 10 मिलकर आपकी गाड़ी को सीधा कर देंगे. We'll respond and we'll help you out. That is a team to work. That's not a PSO. I'm a trained policeman. You know, I carry my gun. I can save myself. I save many others also. But they're not my PSO. बहुत लोग लगता है PSO लेके घूम रहा है. PSO नहीं चाहिए पुलिस वालों को. So the life is like that. That you move around with a team. The vehicle is a vehicle. जो ऊपर लाइट लगता है ना गाड़ी में, वो हमारा VIP लाइट नहीं होता है, इमरजेंसी लाइट होता है. VIP लाइट वो लगाते हैं जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता. हम तो ऑटो से भी उतरेंगे तो उसी जोश में उतरेंगे ना यार. ऑटो से भी वर्दी पहन के उतरेगा तो क्या उसके टेंशन में कमी हो जाएगा.
वो उसी स्टेशन में उतरेगा, वैसी लाठी लेके उतरेगा, बंदूक लगा। अब वो मर्सिडीज से उतर रहा है या ऑटो से उतर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर लाइट लगा है कि नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। So life of an IPS officer is like that, where you look at him as something very big aura, यार इतना सारा आदमी लेके या लाल रंग की गाड़ी, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, यार क्या जा रहा है भाई, क्या लाइफ है, इतना बड़ा बंगला इतना। But with great authority and powers and facilities comes great responsibilities, where you are actually not enjoying the facilities, you are more busy trying to deliver your works. जो आपको मिलता है एज एन IPS एज एन IAS, वो आपको मजे करने के लिए नहीं मिलता है, काम करने के लिए मिलता है। वो बंदूक दिवाली में पटाखा छुड़ाने के लिए नहीं होता है, यू नो दैट इज ऑफ वर्क। वो लाठी भी डांडिया खेलने के लिए नहीं होता, वो भी काम के लिए होता है। जो कलम मिलता है वो भी आपको ऑटोग्राफ देने के लिए नहीं मिलता, वो यू नो हर सिग्नेचर का दाम होता है, उस पर देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन ईच एंड एवरी सिग्नेचर। जो बड़ा सा आपको बंगला मिलता है, वो बंगला इसलिए नहीं मिलता है कि आप उसमें पार्टी करिए, मजे करिए, यू नो वो बंगला आपको इसलिए मिलता है कि लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू entertain a lot of big meetings, lot of people coming in, you have to do lot of things, बहुत सारा काम करना पड़ता है जिसके लिए आपको वो चीज मिलता है। तो बंगला इसको आपको बंगला में गार्डन इसलिए मिलता है क्योंकि आप बाहर गार्डन में नहीं जा सकते, you are not allowed, if you go there will be a problem there, isn't it? The other people's restrictions will come up, इसलिए आपको बड़ा गार्डन दिया जाता है। आपको अलग गाड़ी इसलिए दिया जाता है कि आप इसमें क्या बोलते हैं बस में नहीं चढ़ सकते, बस में चढ़ेंगे तो पहुंचेंगे नहीं, बंदा मर जाएगा, इसलिए गाड़ी दिया जाता है। वो लाइट दिया जाता है अपना झकास करके उसको, मतलब यू नो अपना को ऐसा करके फोटो खिंचा के, है ना। वो जो लाइट मिलता है वो भीड़ से काट के जल्दी से जल्दी जाके, आग लग गया कहीं कुछ हो गया वहां पे पहुंचने के लिए मिलता है। So that's the life of an IPS, where you look as if कि यार क्या लाइफ है बॉस। जब उस वर्दी में आओगे ना अलग फील आता है। But the good part is yes, if you enjoy the job, I believe personally that there is no other better job than police. ये मेरा मानना, बाकी सबका अपना अपना चीज है। I understand कि for me personally, my aptitude, I don't work, you know, I'm doing what I like doing, so I'm actually enjoying and get paid for what I like doing, you know. So whenever you choose a career, you choose a career which you like doing it. Don't join APS if you don't have a मन नहीं होता। ACS ज्वाइन कर लो, ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लो, एक्साइज ज्वाइन, कुछ भी कर लो, पुलिस मत ज्वाइन करना अगर वो एप्टीट्यूड नहीं है तो पागल हो जाओ। You'll get mad, you'll get just frustrated, and you start misbehaving. I don't misbehave with people. Why, you know? Because I'm loving my job, यार। मुझे मजा आ रहा है, मैं क्यों किसी से misbehave करूँ? मैं खुद खुश हूँ, मैं खुश हूँ तो आपको खुश रखूँगा। मैं खुद खुश नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी को नौकरी समझ के कर रहा हूँ, as if that I'm living for my livelihood. मैं इसलिए जिंदा हूँ, मैं इसलिए रोज उठता हूँ कि मुझे नौकरी पे जाना है, ऑफिस जाना है। Then I start misbehaving because I'm frustrated. But I don't want to sleep because I want to live that life. सो के टाइम वेस्ट क्यों करना है? I'll go do something in my police uniform. वो जब जज्बा होता है तो you never misbehave with someone, and you are confident. If you are confident, I know. If you are confident, मुझे पता है, कहते हैं क्षमा शोभत उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो, है ना। उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल। मतलब वो जो सांप आपके बगल से गुजर के चला गया, बोले अरे नाग देवता थैंक यू कितना महान है, बिना काटे चला गया। बाद में बचा तो पानी वाला सांप था, काटने से कुछ नहीं होता, तो उसने आपको माफ कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन एक बड़ा सांप जो कि एक डंक में आपको 10 सेकंड में मार डाले, वो अगर आपको बोलता है चल छोड़ बच्चा जा मैं काटता था, तब उसको बोला नाग देवता महान है, आप छोड़ दिए। ये कॉन्फिडेंस आना है आप एज अ पब्लिक सर्वेंट, दैट यू हैव ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, you have all the training of the government, you have all the procedures on your sides, you have lot of support system to do something that was so powerful, then it makes you confident. Then आप छोटे मतलब कि जो कमजोर लोग हैं, जो कि किसी प्रॉब्लम, आप उन पे हीरोगिरी करके अपने को डोंट डिराइव करके किया है ना, वो सब किक आप नहीं मांगते थे, क्योंकि आपको पता नहीं इतना पावरफुल हूँ मैं यार, इतना पावरफुल हूँ तो मैं बड़ा करूँ, पहाड़ उठाऊंगा, आई डू समथिंग, मैं बड़ा हूं तो मैं इसके ऊपर क्यों कूद जाऊं, इसको दबा दूंगा, यू नो। सो ये जो फीलिंग आ जाता है ना, तो ये जिन IPS ऑफिसर्स में आ गया है, बिलीव मी, आई मीन दे हैव टर्न इनटू रोल मॉडल्स, एंड KPS गिल ले लीजिए, बड़े-बड़े लोग रहे हुए हैं, यू नो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि दे हैव रियलाइज्ड कि दे हैव गॉट ऑल द अथॉरिटी एंड द पावर्स टू डिलीवर समथिंग, टू डिराइव दैट अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस। ये जिसने अंडरस्टैंड कर लिया वो मस्त जिंदगी जी रहा है, है ना। मैं जब कभी घर जाता हूँ ना, बिलीव मी, एक स्प्लेंडर गाड़ी है मेरे पास, स्प्लेंडर बिंदास लेता हूँ करके ना गलियों में घूमता हूँ,
किसी को नहीं बताता मैं कौन हूँ, पुलिस वाला भी रोकता है, रुक जाता हूँ, कागज वाले जो देखता दिखाता हूँ। आजकल पहचानने लगे लोग, बट जब नहीं भी पहचानते थे मैंने वाज आई नेवर फ्लॉन्टेड माय हु एम आई, यू नो। हियर आल्सो मैं बता रहा हूँ, गुवाहाटी यू विल फाइंड मी मूविंग अराउंड लेफ्ट एंड राइट, ऐसे घूमता हूँ मैं कभी भी कहीं दिख जाऊंगा मैं, बिकॉज जो मेरा मिला है मुझे काम के लिए मिला है, जो मेरे पास अथॉरिटी पावर्स जो पोजीशंस है दैट इज फॉर सम वर्क। आईपीएस की लाइफ बता रहा हूँ, ये चीज जब दिमाग में क्लियर रहता है ना, देन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ गेट्स बैलेंस्ड। ये दोनों जब आपस में घुस जाता है तो ना पर्सनल ठीक रहता है ना प्रोफेशनल ठीक रहता है, पूरा कचरा। मैं सोचू यार मैं तो इतना सीनियर आईपीएस ऑफिसर हूँ यार, ऐसा गिटार बजाऊँ कैसा दिखेगा यार, अच्छा नहीं दिखता। मैं बाइक लेके जाऊंगा यार, गाड़ी, मेरे दोस्त मुझसे पूछना कि सर आपको सरकार ने कार नहीं दिया क्या बाइक पे घूमते रहते हो, you know, people have asked me, started asking me like that also. So this is something which I'm happy about. You know? I am not misusing the things which have been given for me to do some duties and responsibilities. तो IPS की लाइफ ऐसी है ब्रदर, पुल्स है, पुशेस है, ग्लैमर है, चकाचौंध है, lot of responsibility है, lot of मस्ती and मजा है, if you want to really enjoy it. So IPS, the life of an IPS is perhaps I believe it gives you a 360-degree full control of your life and your situations. You know कि हमारा सबसे बेस्ट पार्ट जो पुलिस में क्या होता है, हमारा कहीं नो एंट्री नहीं होता। That is the best part. जैसे IPS जब कोरोना में सब आप अंदर थे, अभी थे ना बाहर घूम रहे थे। तो ऐसा I'm happy about that. I'm just telling you that these are some perks of police. These are some benefits of being into IPS, where you are when you speak you are taken seriously. In a civil court, when you speak, you may be very senior position, but the person may just not understand the benefit of extra benefit of police and IPS is जब आप खड़े होकर कुछ बोलते हैं ना बस तो बंदा एकदम सीरियसली लेता है, यार नहीं ठीक से सुनो इसकी बात, करना है यार, ये करना है सर, एकदम होमो सर इत्या खोलिया सर, you know, so that makes a great huge difference. I remember when I was in Meghalaya, there was my senior and a very senior civil servant in the secretariat. They were talking, you know, among themselves. And I happened to go, I saw my senior, saluted him, Jai Hind sir, and went off. बाद में पता चला the other person was a very senior civil servant, and उसको बुरा लग गया, हाँ मुझे कुछ बोला ही नहीं इसने, मैंने पहचाना नहीं भाई आपको। अब वो तो you know यूनिफॉर्म दिखता है ना, विजिबल है, तो ये एक आईपीएस का एडिशनल चार्म है, you know that you are visible and you can visibly, जब होता है ना एक अलग, वो थोड़ा सा होता है यार, ये मानना पड़ेगा, तो एक अलग किक देता है ना, when you are visible and when you get visibly involved into something and you are in a serious situation of command and control. अब देखो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे बस, करोड़ों रुपए होंगे, अब बहुत बड़े कोई आदमी होंगे, कोई गवर्नमेंट में होंगे, कोई मिलियनियर होंगे, बिलियनर होंगे, बट आप अपना कुर्ता पैंट पहनिए, कुर्ता पैजामा पहनिए, जो मर्जी हो, जीएस रोड पे जाके खाली ऐसे करिए रास्ता, और चढ़ा के चला जाएगा, दो थप्पड़ मारेगा, दो गाली देंगे, पागल हो गया क्या, बट एक हमारा होमगार्ड ऐसा करेगा, और बड़ा ऑडी हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी खड़ा हो जाएगा, you know, that is the power of it, because this is something which I was telling about IPS also. This is a thing which we carry in ourselves, and this has to be done with responsibility. This has to be done with serious responsibility. जब भी आप हाथ उठाते हैं, ये ना हो कि इसके हाथ उठाने से पीछे लाइन से एक्सीडेंट हो, तो I have to ensure that कि गलत जगह पे हाथ न उठा दे, कि 120 की स्पीड में अटैक कर हाथ उठा दिया, तब डाउन पूरा जीएस रोड पे गाड़ी बढ़ जाएगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, right? So in brief, that is the life of an IPS officer. Thank you so much. Yes. Sure, please. The thing is that right now you don't live the life of administrator or a policeman just like you. It's quite fascinating. So the thing is that when you deal with unruly politicians, boisterous politicians, or group politicians, or asinine or cynical politicians, how do we deal with such politicians, bureaucrats, and syndicates and mafia groups? Right. Thanks, buddy. What's your name? Abhigyan. Abhigyan. Right, Abhigyan. Thank you. Like as of this dealing with politicians, number one thing that as आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आता है, Say such a nice person, so much as subordinates, the CID chief, he's quite unruly and rude. Maybe he is doing a job. That's why he did not join police. नौकरी खोजने में पुलिस ज्वाइन कर गया, तो but yes, you are right, and maybe it will take some time, but I believe if you ask your parents or grandparents, they'll say they were worse earlier. They have become much better nowadays. I believe we are becoming better with the passing days, and the accountability is coming, the media visibility is coming, so people are becoming better, more ruly, I believe.
and hope for the best. You guys join and get the system more in place. Okay? So that is the thing. So before I go to the question, system se yaad aaya. Never ever tell that you have joined the system to change the system. Remember that as a bureaucrat, you are joining the system to maintain status quo. You are joining the system to maintain the system, make the system flourish, and not change the system or break the system. Okay, ये फंडा क्लियर रखना. Okay, don't ever think कि हम change करना चाहते हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं, तो politician बनिए, public servant नहीं. ठीक है, you have to get out of the system. आप नहीं कर सकते. हमारा जो political setup है, जो democracy में, they take care of change things and all. You have to just support them, maintain it, nourish it, not change it. ये बात. दूसरा, what you asked, when you tend to meet not only politicians, many unruly people, any unruly person, misbehaving person, the first and foremost thing, what we as a public servant should understand, we are better trained. We are more in control of a situation. We know कि हम एक कलम में आपको left से right कर सकते हैं. So we know how authority lies on us. Lot of things, So we should be confident with it. And if the other person is unruly, I cannot be unruly equally. That will become रास्ता में दाम लड़ाई शुरू हो जाएगी. So one person has to take control of the situation. So जब बच्चे दो लड़ रहे हैं या कोई भी एक होता है, one fellow has to take control. So we as trained public servant have to take control of the situation. If somebody is misbehaving, I take control of the situation, but I will make him understand if this what you are doing is again not correct. That has to come back. If I just take it and go, then there is a problem. My training has an issue, my personality has an issue. But if you misbehave with me, I'll explain you politely, Mister, this is where you are getting wrong, and you are on the wrong side of law, and I am bound to take my actions, so please come into my gypsy. Okay, so one is that. Second, if ever any political person or somebody is approaching you and asking you to do something which may not sound good and correct, still you cannot discount that. Because a politician is selected to do that, elected to do that, sorry. He is representing millions of people. He cannot bitch his own people. Yeah? If somebody has approached his MLA or a councillor, it looks, sir or madam, please get this done for me. He has to speak for them. He has to ask even if it is illegal. He has to ask even if it is not as per the norms for the process or procedures. Because he does not know that. He only knows कि भाई इटू problem होई से ये मानो को एड़ी दी बोलाई. अब कहने का अपनी कोई कोई तो अपनी जाना. Then you have to give him some sense. Look, sir, okay, the problem is not that big. We can sort it out. We can send him for counseling. We can maybe, because he has done an offense, he should be tried in the court of law. But he does not need to be arrested for that. It's a bailable offense. We can let him go out from that. This is somewhat in between. But we know he has murdered somebody, raped someone, and he wants me to leave. I have to explain the person. Look, sir, what you are asking for is not correct. And me as a public servant, it's my duty to make you understand the correctness of law and the correctness. Sir, बोलिए मैडम. Must go on. Sipai देते रहता है. Yes. Sir, my question is that, sir, if there is a gap between your post-graduation or your job, the last job you did, and then you are appearing for the interview, and they ask you this question, sir, what do you say? मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो बोल सकता हूँ in between I was trying to pursue some of my hobbies. I was trying to just live my life. I was trying to figure out who am I, what am I trying to do. Yeah, it was. That, anything. Be truthful. I was not sure of what I want, but suddenly one day by discussion or something I felt that I need to do this. So I changed. There was a change of mind, and I think now this attracts me. So it will work. Okay, done. Cool. So hoping that all of you get selected. Okay, in your upcoming interviews, I hope that wherever Zaruri, this is not the end of the world. Wherever in life you go, you will be successful. Wherever, whatever you do it truthfully. आप दुनिया के माउंटेन पे कितने सक्सेसफुल होते हैं या नहीं पता नहीं, but you will be a satisfied person, and that is what matters. जितने हिंदू हैं, लास्ट में लोटा में आ जाएंगे. Is it? वो लोटा वो भी पानी में फेंक देंगे. So we actually learn nothing such thing. है ना, सबको जितने बाकी जो मुस्लिम्स हैं बाकी वो भी आप सिमट जाएंगे वही 6 फुट के कब्र में, और वो भी धीरे धीरे होकर उस मिट्टी के पार्ट में गए.
know that life is like that, so take it seriously, but not so seriously that you become, so serious कि फिर आपको कुछ और दवाई कराना पड़े, हॉस्पिटलाइज करना पड़े, इतना सीरियस भी नहीं होना, ठीक है? Take it seriously, but don't stop enjoying your life, don't stop living your life. Remember my last words which I keep telling to everyone, that your livelihood is to let you live properly. Don't live for livelihood. नौकरी के लिए मत जीना कभी। एक बार नौकरी करना इसके लिए पैदा हुआ हूँ, सुबह उठते नौकरी, रात को नौकरी, 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 पागल हो जाओगे। Don't do that. Okay, live your life. That is important, right? That is important. Thank you so much. So I hope it was a great session for all of us to have sir amongst us, and especially I thank Anand sir from the request of our for being here amidst his busy schedule, and I am very sure that his words will definitely help us to face the interview in the upcoming time periods. By month of May, we are expecting the interview to be conducted by APSC. So his valuable words will definitely guide us to face the interview with a very honest point of view of ourselves. I hope your doubts are cleared. If you want, I'll be also sharing some of the viewpoints and what are the program schedules in the upcoming time period, in the upcoming days. We'll be having also one-to-one sessions, mock interview sessions. Our ex-DGP sir will be also here to take one-to-one mock interview sessions. So we'll be keeping you up with the details. So since sir is in a very tight schedule, I think he'll have to leave us. So we'll take just a last group photograph with him.